अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमएस पावर पॉइंट एमसीक्यूज़ के पार्ट 4 पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इसे पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री ऑप्शन अवेलेबल इन इंसर्ट। इंसर्ट टैब में कौन से थ्री ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, ऑटो शेप्स। ऑप्शन बी पिक्चर्स, शेप्स, फोटो एल्बम। Option C, clip art from file shapes. Option D, clip art pictures shapes. The correct answer is pictures, shapes and photo album. Question number 2 is correct method to insert slide number. Slide numbers को insert करने का सही method क्या है? Option A, insert new text box and select insert slide number. Option B, choose insert slide number. Option C, insert a text box and select insert number page number. Option D, insert a text box and select insert page number. The correct answer is choose insert slide number. Question number 3 is to insert a hyperlink in slide. Slide में hyperlink किस तरह ऐड कर सकते हैं? Option A, hyperlinks can't be inserted in slides. Option B, press Ctrl plus K. Option C, choose insert hyperlink. Option D, both A and B. The correct answer is option D, both A and B. Question number 4. In PowerPoint presentation, option A, movie clips can be inserted but not sound clips. Option B, sound clips can be inserted but not movie clips. Option C, both can be inserted. Option D, both cannot be inserted. The correct answer is both can be inserted. Question number 5 is when you delete a text box object from a slide in PowerPoint. Option A, the text box and the text both are deleted. Option B, the object is deleted but text box inside is left on the side. Option C, the text box is deleted and the text is pasted on the slide. The correct answer is none of above. Question number 6 is what is slide transition? Slide transition क्या होती है? Option A, the way one slide looks. Option B, a special effect used to introduce a slide in a slideshow. Option C, letters. Option D, overheads. The correct answer is a special effect used to introduce a slide in a slideshow. Question number 7 is what happens if you edited an image inserted in PowerPoint? Option A, the original is changed when you save presentation. Option B, the original file that was inserted is changed. Option C, the original file that was inserted is not changed. Option D, none of above. The correct answer is the original file that was inserted is not changed. Question number 8. If you select insert pictures. Option A, you can insert pictures only. Option B, you can insert clip art only. Option C, you can insert pictures and clip art. Option D, none of above. The correct answer is you can insert pictures only. Question number 9 is which file format can be added to a PowerPoint show? PowerPoint show में कौन सा फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं? Option A, WAV. Option B, GIF. Option C, JPG. Option D, all of above. The correct answer is all of above. Last question is in Microsoft PowerPoint, two kinds of sound effects files that can be added to the presentation are Option A, JPG files and GIF files. Option B, WAV files and JPG files. Option C, WAV files and GIF files. The correct answer is WAV files and MID files. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बार वक्त आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।